यहाँ पे देखते हैं इस ग्रुप की बात हो रही है, इस ग्रुप में दो बच्चों की, दो लड़कों की बात हो रही है, अली और उस्मान। पूरे ग्रुप की बात नहीं हो रही है। अली और उस्मान उस ग्रुप में से निकाल के तो अली और उस्मान के बारे में बात हो रही है कि अली और उस्मान इस लेकिन पूरे ग्रुप में यहाँ पे ऐसे बोल जो है दोनों की बात हो रही है। लेकिन आगे ग्रुप दोनों सबसे इसको एक सिंगुलर पर यूज किया है। बाद नहीं लगाने में बाद लगा इस तरह यहाँ पे क्या है, अब ये भी एक खोल सकता है। अब अली या उस्मान इस बात को खोल सकता है, खोल सकते हैं नहीं आएगा। तो ये स्क्रीन दैट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। मीटिंग interrogative adjective. What is interrogative adjective? Okay. Question number 2 is 8x2 plus 60x plus 150 plus 125. Okay. Now you can convert this into formula equals to 2 as a is cube x equals to 125 as 5 into plus b plus convert this into formula a square plus 3ab square. The value of a is 2x into b value of b is 5 plus 3 into 2x into 5 square plus 5. We can replace this with formula z goes into 2x plus 5y. Okay, hope you may understand this. Let's move on next question. Next part. Describe the nouns color, shape, size. ये तो एडजेक्टिव और यहाँ पे इंटररोगेटिव और क्वेश्चन नंबर 3 is नाउन का कलर x cube minus x plus 108x minus whose shirt is this? देखिए whose, okay, आपकी शर्ट है ये नाम है x cube. You can write 216 as 60. Assalamualaikum. Class 7. Today is our lecture about lecture number 4. About chapter number 2, human organ system. First of all, we have to recall this topic. We have studied about the human blood circulatory system, which we have already learned about the heart. Now we are going to discuss about the blood vessels. The blood vessels throughout the body travel throughout the body through blood vessels. The 3 types of blood vessels are arteries, capillaries, and veins. Now today we will learn about the arteries, capillaries, and veins. First part is arteries. Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. Arteries have thick and flexible walls. Have thick flexible walls. Most of the arteries carry oxygenated blood, but pulmonary arteries carry deoxygenated blood to the lungs. So what are the arteries? Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. You must have remember that the arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. They are thick and flexible, and they have thick and flexible walls. Most of the arteries carry oxygenated blood, but pulmonary arteries carry deoxygenated blood to the lungs. Now, second part is capillaries. Arteries divide many times to form smaller tubes called capillaries. What are capillaries? Arteries divide many times to form smaller tubes called capillaries.
capillaries are smallest blood vessels in the body. They are so small that red blood cells flow through them one cell at a time. They are too short that only one red blood cell can flow at a time. So food and oxygen from the blood of capillaries diffuse into the cells. Waste materials and carbon dioxide from the cell diffuse into the blood of capillaries. What is the main function? Food and oxygen from the blood of capillaries to diffuse into the cell, whereas waste material and carbon dioxide from the cell diffuse into the blood of capillary. So we can also say that capillaries take oxygen, food and oxygen, and diffuse it into the cells, whereas waste materials and carbon dioxide from the cell diffuse into the blood of capillaries. Then veins capillary join to form the larger blood vessels called veins. After capillaries, the veins where the capillaries join to form the larger blood vessels called veins. Veins are the blood vessels that bring blood back to the heart. Most of the veins bring deoxygenated blood back to the heart, but pulmonary veins bring oxygenated blood from the lungs to the heart. If you remember, we have studied in the arteries that most of the arteries carry oxygenated blood, but pulmonary arteries can carry deoxygenated blood to the lungs, whereas veins, most of the veins bring deoxygenated blood back to the heart, but pulmonary veins bring oxygenated blood from the lungs to the heart. So you must have remembered that pulmonary veins and pulmonary arteries have different working according to the as compared to veins or simple arteries. Next thing is diet affects our circulatory system. Our diet and lifestyle affect our circulatory system and cause many diseases such as heart attack, blood pressure, diabetes, and stomach. These are the few diseases which may cause due to the our diet or lifestyle effect of our circulatory system. We will discuss it one by one. Number one, heart attack. The heart is made of muscle cells. These cells, just like other cells in the body, must receive oxygen and food through circulatory system. What is the heart? The heart is made of muscle cells, and these are just like other cells in the body will receive oxygen and food through circulatory system. The blood vessels which supply oxygen and food to the heart are called coronary arteries. Okay, the blood vessels which supply oxygen and food to the heart are called coronary arteries. A heart substance called plaque can build up in the walls of coronary arteries. What happens? How the heart attack? How the people can suffering from heart attack? First of all, a heart substance called plaque can build up in the walls of coronary arteries. This plaque is made of fat and other cells. This plaque is made of fat and other cells. The coronary arteries may become narrow due to plaque. Sometimes a blood clot form on the plaque and block coronary arteries. What happens? Actually, a heart substance called plaque can build up in the walls of coronary, which is made up of fat and other cells.
After a few times, when the coronary arteries may become narrow due to plaque, sometimes a blood clot form on the plaque and block the coronary arteries, due to which the coronary arteries may become narrow. Sometimes a blood cannot reach a part of the heart. This part of the heart begins to die due to lack of oxygen and food. When the arteries block, then what happens? This part of the heart begins to die due to lack of oxygen and food. The death of a part of heart is called a heart attack. एक बार फिर हम इसे समझते जाएं कि असल में होता है क्या है कि हमारे जो सेल्स हैं, आर्टरीज हैं, जोन सी उसमें एक प्लेक जमा हो जाता है जो कि फैट और अदर सेल से मिलकर बना होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो दिल के जो इनको आम अल्फाज में हम लोग कहते हैं दिल के वाल वगैरह, इनमें जब जब तय इसकी बनना शुरू हो जाती है तो एक टाइम आता है कि वो उस पर आस्ता आस्ता उसमें से जो इजीली ऑक्सीजन वगैरह और फूड वगैरह जो उसमें से गुजरती थी वो क्या होती थी उधर जाके स्ट्रॉक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे दिल का वो हिस्सा बंद हो जाता है जिसको हम आमतौर पर कहते हैं दिल हमारे वो जो है वो पार्ट डाई हो चुका है, मर चुका है। और जब वो फूड और ऑक्सीजन वहां से नहीं गुजरता तो फिर क्या होता है, वो डेथ होने की वजह से उस पार्ट को हम क्या कह देते हैं कि वहां पर हमारा हार्ट अटैक आ चुका है। मतलब कि हार्ट का वो हिस्सा वहां पर हमें फूड और ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है और हम कहते हैं डेड हो चुका होता है वो पार्ट, उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। नाउ नेक्स्ट, a common disease like high blood pressure. High blood pressure is a disorder of circulatory system. Blood pressure is the amount of force exerted by blood against the walls of arteries. What is blood pressure? The blood pressure is the amount of force exerted by blood against the wall of arteries. If the blood pressure of a person remains above the normal value, what is the normal value? 120 by 80. You must have remembered that. It may become an as MCQs in paper. So you must have remembered that 120 by 80 is the normal blood pressure. If the blood pressure of a person remains above the normal value 120 by 80, the condition is called high blood pressure or hypertension. The increased blood pressure can damage blood vessels and the result may be the failure of kidneys and heart. What happens when the high blood pressure will be high? The increased blood pressure can damage blood vessels and the result may be the failure of kidneys and heart. People with high pressure may have the symptoms such as headache, fatigue, blurred vision, nosebleeds, etc. Food high in fat, high salt intake, smoking, obesity, diabetes, lack of exercise, etc. raise the risk of high blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज थी कि जब भी पहले तो प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि हमारा ब्लड एक्सर्ट करता है, उसको लगाता है, फोर्स लगाता है वॉल्स ऑफ आर्टरीज के ऊपर, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब जब ब्लड प्रेशर किसी भी इंसान का 120 by 80 से अबव होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अब जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, इससे हमारे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है, एक इंसान की बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो इससे क्या होता है, ये फेलियर ऑफ किडनीज और हार्ट और किडनीज के फेल होने का भी जरिया बन सकता है। Whereas people with high pressure may have symptoms such as headache, fatigue, blurred visions,
मतलब कि उसके जो है धुंधलापन नजर आना, मतलब कोई भी चीज उसका जो है धुंधली नजर आना शुरू हो जाती है। नोज ब्लीड्स, आपके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। अब फूड्स दैट मे कॉज हाई ब्लड प्रेशर आर एज फॉलोज: हाई इन फैट, those food which have high fats, high salt intake, ज्यादातर नमक खाना, स्मोकिंग, obesity, ये क्या लें कि सिगरेट नोशी वगैरह इस तरह की चीज़ें, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और डायबिटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप अगर नॉर्मली अगर एक इंसान अगर एक्सरसाइज नहीं करता तो उसकी वजह से भी उसके ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। Now next, diabetes. Diabetes is a disease in which a person has high blood sugar because his or her body does not produce enough insulin. Diabetes is a disease in which a person has high blood sugar because his body or her body does not produce enough insulin. What is insulin? Insulin is the chemical that is produced in our pancreas. Insulin helps to decrease blood sugar. Without insulin, a person develops diabetes. Okay? A person can control his or her sugar level by taking medicine, eating proper diet, and taking exercise. तो डायबिटीज का, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर की बीमारी भी कहते हैं, असल में होता है क्या है कि हमारा ब्लड शुगर, जो हमारे ब्लड शुगर है वो रेज हाई हो जाता है तब जब हमारे जिस्म इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में पैनक्रियाज में क्या होता है, इंसुलिन गैप बन रही होती है जो कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। मगर जब हमारा पैनक्रियाज जो है वो ब्लड शुगर इंसुलिन बनाना खत्म कर देता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लड शुगर है वो क्या होता है, वो हाई होता जाता है, जिसकी वजह से हमें ये शुगर की बीमारी हो जाती है। अ पर्सन कैन कंट्रोल शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, ईटिंग प्रॉपर डाइट एंड टेकिंग एक्सरसाइज। Sugar can be controlled by taking medicines, eating proper diet. Proper diet means you must have eat that things which are lack of sugar, and taking exercise. Symptoms: loss of weight, frequent urinations, excessive thirst, and hunger, etc. are some of symptoms of diabetes. Loss of weight, frequent urination, excessive thirst, and hunger are some of symptoms of diabetes. If the patient does not control the level of blood sugar, he or she may be at risk of loss of eyesight and hearing, heart attack, gum disease, kidney disorders, etc. अब वो इंसान के जो कि आपके कंट्रोल नहीं कर सकते, बेसिक ज़्यादातर उनका रिस्क होता है, मतलब कि वो इस चीज़ का ख़तरा होता है कि वो अपनी उनकी आईसाइट, सुनने की ताकत, हीरिंग और हार्ट अटैक वगैरह भी उनको आ सकते हैं, गम डिजीज एंड किडनी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मोस्टली उनके किडनीज वगैरह भी इसी की वजह से फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट, अस्थमा. Asthma is an allergy that causes the airways of lungs to swell and narrow. Asthma is an allergy that causes the airways of lungs to swell and narrow. A person with asthma may wheeze. What is wheeze? A whistling sound when he or she breathes, cough, and feel tightness in the chest.
सो अस्थमा क्या होता है कि ये सांस, इसमें आपने देखा होगा अक्सर लोगों को सांस जो है लेने में मुश्किल होती है। ठीक है, बेसिकली होता है क्या है कि इसकी वजह से हमारे जो फेफड़े हैं इसमें ये क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो सांस है वो इजीली एक इनके अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होता है नॉर्मली जब वो इंसान सांस लेता है तो उससे सांस से आवाज भी आती है, खांसी वगैरह भी होती है, और एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, और उनको जो सीने में दबाव भी महसूस होता है। द टाइटनेस दैट कैन कॉज अस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस, dust mite, pollen grains, and some food may cause asthma. Which things are responsible for the asthma? Dust mites, pollen grains, and some food may cause asthma. Next, symptoms of asthma. Symptoms of an asthma attack may be cough and shortness of breath, wheezing, extreme difficulty in breathing, chest pain, sweating and increased pulse rate. Severe asthma attack may lead to death. What are the symptoms? Symptoms of asthma may be cough and shortness of breath, wheezing, a whistling sound when he or she take he and she breathes, extreme difficulty in breathing, chest pain, sweating, and increased pulse rate. Severe asthma attack may lead to death. अब अस्थमा के क्या क्या होते हैं, खांसी वगैरह, सांस कम आना, सांस लेते हुए उससे आवाजें आना सांस की, इसके बाद सांस में दुश्वारी, चेस्ट पेन, पसीना आना, और आपका जो है ये पल्स रेट है उसका इंक्रीज हो जाना। सम severe asthma attack may lead to death, कि ये अगर ये एक क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान की इससे डेथ भी हो सकती है। It is not easy to cure asthma, but one can be normal and active even with asthma. Asthma cannot be cured easily, but if the people take a normal exercise or medicine, then it may be live for a long time. There are some points. Number one, try to avoid the allergens of asthma. हमें उन चीजों से बचना है कि जिसकी वजह से अस्थमा होता है। यूज प्लेंटी ऑफ वाटर, इट विल गिव यू रिलीफ। यूज प्लेंटी ऑफ वाटर, कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी भी पीना चाहिए। ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, यूज मेडिसिन और इनहेलर। द मेन पॉइंट इज एडवाइस, और यू मस्ट have to consult your doctor to take advice. He will advise you about medicines and inhaler. So there is last topic, transportation in plants. Plants do not have a circulatory system like human and animal, but they do need to move water and food from one part to other. Although plants have not circulatory system like human being, but they have to move water and food from one part to other. So plant transport water and minerals from roots to leaf through xylem vessels. Plants also transport water and food like minerals from roots to leaf through xylem vessels. Phloem transport prepared food from leaves to all other parts.
Column transports prepared food from least to all other part. So today's lecture has been over now. If any students have any kind of issue, he or she can text me. Inshallah, I will reply you. Time on again. High blood pressure is danger. Both are dangerous. Excess of high blood pressure or very high, low pressure blood pressure, both are dangerous if they are on their extreme position. Otherwise, they are not so harmful. Asthma is a disease due to which you can't breathe easily. You have just seen some of the people who are suffering from asthma, they cannot breathe easily whenever they run or can I say if they go on high places, they have some breathing problems known as asthma. Symptoms of an asthma are cough and shortness of breath, wheezing, extreme difficulty in breathing, chest pain, sweating, and increased pulse rate. मतलब कि उनको खांसी वगैरह, सांस का रुकना, सांस लेते हुए आवाज़ ज़्यादा आना और सांस लेने में मुश्किल और चेस्ट पेन वगैरह और पल्स रेट उनका इंक्रीज हो जाता है, ये सब कुछ आप कह लें कि उसके सिम्टम्स हैं अस्थमा के. Inform me, can you see this thing or can you hear me? Inform me kindly.
Allergens usually are harmful substances capable of triggering a response that start in the immune system. मतलब कि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है और उसके रिजल्ट में आपको क्या होता है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। मतलब कि वो चीज़ें जिन चीज़ों से एलर्जी वगैरह हो, आप उसको एलर्जेंस कह सकते हैं। Diabetes can be controlled by taking special diets and exercise or insulin. These are and these are some things which may be lower your diabetes. जना बेटा, आपका पहला सवाल मुझे उसका सवाल की समझ नहीं आई। आपने सवाल इसमें में किया क्या है, वो जुलाई सिलेबस वगैरह के बारे में, कैंडी वो आप मुझे बता दें कि आप असल में क्या पूछना चाह रही हैं उसके बारे में। उसके बाद था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन ये हमने बेसिकली जो अभी तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जितना भी पढ़ा था कि हमारा फूड वगैरह और क्या नाम है सांस वगैरह के किस तरह हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमारे पहले 2 चैप्टर जो turn on your radio. Okay? Mute yourself. Kindly. Let's start our today's lecture. Today's lecture number 9. Lecture number 9. Unit number 7 of unit name is energy. Okay. Hope you can all listen to me. Before going to next lecture, I want to overview your previous lecture. Our previous lecture was pollution, air pollution, energy conservation part. Okay. What we should do to conserve energy? What we should do question to class 7 any question? to save energy? We have in previous lecture we have learned about thermal pollution. Thermal pollution. First, I want to explain you about previous lecture. Thermal pollution is about an increase in the temperature of the environment. Okay. That may be harmful for our life and You have to learn this topic and increase in temperature in the environment and increase in temperature discuss in the about environment is called thermal pollution. That means absorption of water blast ratio of through heat roots in the next topic and that may also harm again to all the Allah living Hafiz. things in the world, in this world, in this area. Okay. Then I